easy way to commerce. And because of COVID-19, you all are missing your classes, and that is why I have started my online classes. Now, this topic, the topic which I am going to take today is capital structure, and it is from Business Studies, Class 12th, Financial Management. That is second part of Business Studies book. Capital structure. This capital structure means the ratio between debt and equity. So capital structure, see the definition of capital structure is the proportion of debt and equity used for financing the business operations. Means तो बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन को या कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं, और फंड्स दो तरह से, मेनली दो तरह से कंपनी फंड्स ले सकती है. फर्स्ट टाइप ऑफ गेटिंग द फंड्स इज इक्विटी, दैट इज कंपनी के ओनर से जो कंपनी को फंड्स मिलते हैं. एंड हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर शेयर होल्डर्स. सो शेयर होल्डर्स दे प्रोवाइड द कैपिटल टू द कंपनी, they purchase shares and company takes money from shareholders by issuing shares, and what is known as the share capital is known as equity. And the second is debt. Debt means company, sometimes when company needs more funds and company cannot issue shares, company then take loan from outside. Company can take loan from public, company can take loan from financial institutions, from banks, etc. So the loan taken by the company is known as debt. These two types of funds are used for financing business operation. बिजनेस करने के लिए ये दो टाइप से फंड्स अक्वायर करती है कंपनी. इन दोनों टाइप्स के फंड्स में कोई एक सेट रेशियो या प्रोपोर्शन कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक अ डिसीजन that how much there should be equity and how much amount of debt should be there. Means equity और debt का आपस में क्या रेशियो प्रोपोर्शन होगा, कितने परसेंट इक्विटी होगा, कितने परसेंट डेट होगा. लाइक कंपनी का सपोज टोटल 4 lakhs कैपिटल है, सो इफ debt is 1 lakh and equity is 3 lakhs, the ratio between debt and equity will be 1:3, because debt is 1 lakh and equity is 3 lakhs. Now the ratio between debt and equity means debt upon this ratio, this capital structure is denoted by debt equity ratio, debt upon equity. Debt means borrowed funds. The funds which company takes from outside, means from creditors, means from company borrows those funds in the form of loan, in the form of debenture, in the form of public deposits. And equity means ओनर्स फंड. ओनर्स फंड्स मीन्स शेयर होल्डर्स से जो कंपनी को मनी मिला है, कंपनी ने जो शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट करी है, दैट इज नोन एज ओनर्स फंड्स. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व सरप्लस मीन्स रिटेन्ड अर्निंग्स, मीन्स कंपनी के जो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं उसमें से अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो कंपनी रिटेन दैट प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय द कंपनी ऑल्सो बिलोंग्स टू ओनर्स. सो ओनर्स फंड्स इंक्लूड equity share capital, preference share capital, as well as retained earnings, that is reserve surplus. Now for a student it is very important to understand the cost and risk of debt and equity. Debt के साथ cost भी होती है और risk भी involved होता है. Same way equity के साथ भी cost भी कंपनी को पे करनी होती है और कुछ risk भी होता है. So दोनों का risk और डेट, रिस्क और कॉस्ट को प्रॉपरली समझने के बाद ही कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक डेट नाउ. डेट, द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर. दैट मीन्स जब कंपनी लोन लेती है तो कंपनी को उस पर कॉस्ट पे करनी पड़ती है, एंड दैट कॉस्ट इज नोन एज इंटरेस्ट. कंपनी को लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. सो कॉस्ट एज कंपेयर टू इक्विटी, the cost of debt is lower than the cost of equity. When company has to pay tax, तो टैक्स पे करते टाइम कंपनी को प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं. उन एक्सपेंसेस में एक इंटरेस्ट भी एक्सपेंस माइनस होता है. दिस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट प्रॉफिट. सो डेट, फॉर डेट, व्हेन द कंपनी इज टेकिंग डेट, the interest is a deductible expense from net profits before payment of taxes. So company has to pay less tax when company takes debt. Now risk, in case of debt, risk is higher, means risk ज़्यादा होता है
डेट लेने में कंपनी को ज्यादा रिस्क होता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिस्क एंड द रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंसेस ऑफ द बिजनेस इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क. जो डेट और इक्विटी, डेट पे जो भी रिस्क होता है वो फाइनेंशियल रिस्क होता है. एंड दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क. दो तरह के रिस्क होते हैं लोन पे. एक तो कंपनी को लोन लिया है तो रेगुलर रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट. इसको कहते हैं दैट इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. Now next risk is repayment of principal amount. After certain time company has to repay the principal money also. So company has two types of risk when the company takes debt. तो डेट के साथ कॉस्ट तो लोअर होता है और साथ साथ क्या ज्यादा होता है, रिस्क. सेकेंडली इक्विटी. द कॉस्ट इन केस ऑफ इक्विटी इज हायर देन द डेट बिकॉज with equity the company has to pay. The cost of equity is company को dividend pay करना पड़ता है. So cost of equity is dividend. Company pays dividend to its equity shareholders. Now for calculating tax company cannot deduct dividend from profits. So जो भी total profit होता है उस पर पहले tax देना पड़ता है. So tax rate of tax and the amount of tax to be paid is higher in case of equity. That is why equity is known as it is little costlier than डेट. एंड सेकेंड इज रिस्क. इक्विटी के साथ रिस्क बहुत कम होता है बिकॉज फॉर कंपनी इट इज नॉट कंपल्सरी टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अगेन दे आर द real owners of the company and they are the real owners. So in case the company has any loss or company is unable to pay dividend, it's not compulsory to pay dividend every time. So the risk is less whereas the cost is higher. Where in case of dividend, in case of debt, the risk is higher and the cost is low. Now, the affects the risk is it affects the risk as well as it affects the profitability of the business. If debt is more, the risk will be higher and the profits will also be higher. But if debt is less as compared to equity, so the risk will be less as well as the profits will also decrease. So capital structure affects two things, that is profitability as well as risk. Now the capital structure should be such that the optimal capital structure means the best capital structure will be that capital structure in which the debt and equity are in such a proportion where the risk is less as well as the profits are higher. Understood? These are the important points related to capital structure. You can note down these points. I'm reading it for you. First, debt means borrowed capital and equity means owner's funds. Second, the cost of debt is lower and the cost of equity is higher. Third, debt is more risky. Debt is more risky as compared to equity. Because if a company fails to meet its obligations, that is fails to give financial charges, that is interest, and if the company fails to pay its principal amount, sometimes it may lead the company to the liquidation. Company can be closed also because the company is unable to meet its financial risk, financial charges. So, whereas it is the case with equity, this is not the case. Next, fourth point is higher use of debt. And if a company uses higher debt, means company takes more loan, then what is the problem with the company? It increases fixed financial charges. Company को interest तो देना ही पड़ेगा if company has taken loan, and because of that, which increases the financial risk of the company. Company का financial risk बढ़ जाता है. Then fifth point is the capital structure of a company affects बोथ. दो चीजें अफेक्ट करता है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी. एक साइड प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट होती है और दूसरी साइड फाइनेंशियल रिस्क भी इफेक्ट होता है. इन केस द कंपनी हैज टेकन मोर लोन, तो प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज एज वेल एज व्हाट विल इंक्रीज, फाइनेंशियल रिस्क विल इंक्रीज. On the other hand, if the company has taken less loan and is working with more equity, so the profitability will be less as well as the financial risk will also be less. Next point, capital structure of a company. It should be such that it should emphasize on increasing shareholders' wealth. Shareholders' wealth means value of equity shares. The value of equity shares will go up if the company is continuously paying higher dividend and its capital structure is
optimal capital structure, risk is less whereas profits are high.